Hello, students. How are you? Fine? Very good. I hope you all are enjoying your day by playing and watching videos which we are sending. Correct? Students, I want to tell you something regarding our country, India. India's physical division are Northern Mountain, Northern Plain, Thar Desert, Peninsular Plateau, Coastal Plain, Islands. Students, first is the Northern Mountains. In the Northern Mountains, three ranges are there: Himalaya Range, Vindhya Range, and Satpura Range. Look at the map, three ranges are here. You can see it very clearly. Okay? Now, the Northern Plains. Students, Northern Plains are very fertile. Fertile means upjau, fruitful. Okay? Plains are thickly populated, and the states are UP, it means Uttar Pradesh, Punjab, and Bihar. Now, the Thar Desert. Thar Desert is also known the Great Indian Deserts, and the lands are covered with sand. And the states are Rajasthan, Ajmer, and Jaipur. Lots of states are there, but some are here. Now the peninsular plateaus. Peninsular plateaus also known the Deccan plateaus. Okay, students. It means land almost surrounded by water is called peninsular plateaus. And the states are Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Kerala, and extra. Lots of states are there. Now the coastal plains. Coastal plains means land which are near the sea. It means places near the sea or water body. And the states are Maharashtra, Goa, Kerala, etc. Now the last point is islands. Okay, students, islands. Islands means land surrounded by water all side. That is called island. And the two islands are Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep. We know this very well. Okay, students. Now, the northern mountains. Students, we should discuss here northern mountain today. The northern mountain region of India is mountainous region with snow-capped mountain region and deep valleys. These mountains are known as Himalayas, meaning abode of ice. Abode, it means house, home. स्टूडेंट्स, हिमालय रीजन जो है बहुत ही माउंटेनियस, बहुत मतलब माउंटेनियस रीजन है। चारों ओर पहाड़ पहाड़ हैं, डीप वैलीज़ हैं, और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसको अबोर्ड ऑफ आइस कहते हैं। अबोर्ड मीन्स अ होम। Okay, students, the Himalayas are the highest mountain region in the world. Many freshwater rivers like the Ganga, Yamuna, and Brahmaputra originate here. Students, on the map, you can see here first is Brahmaputra river, second is Ganga river, and third is Yamuna here. See it very carefully. ये तीनों नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। कहाँ से? हिमालय रीजन से। In these mountains, the Himalayas remains covered with snow throughout the years. ये जो रीजन है, जो राज्य है, पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। द नॉर्दर्न माउंटेनियस region stretches from Jammu Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है वो
स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट में जम्मू कश्मीर है देखिए मैप में, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तक हमारा रीजन जो माउंटेन रीजन है वो फैला हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय के पहाड़ यहाँ तक फैले हुए हैं। द रीजन कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल पैरेलल माउंटेन रेंजेस। जो यहाँ पे रीजन है, जो क्षेत्र है, वो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं यहाँ पे, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ये सारे फैले हुए हैं। आप मैप में देखिए, ये रेंजेस आपको दिखाई देंगे, पैरेलल रेंजेस। पैरेलल मीन्स सिमिलर, एक जैसे रेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैप में ध्यान से देखिए बेटा ऊपर। The northern mountainous region spans across several regions. बहुत सारे रीजन से होके ये गुजरता है। यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, देखिए यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होके लद्दाख, this also is union territory. Two union territories are there. First is Jammu Kashmir and second is Ladakh. Two states, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim and seven sister states, Northeast. Students, ये जो रेंज है ये 2 यूनियन टेरिटरी से होके, 2 यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के स्टेट यानी राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम and the 7 sister states. Which are the 7 sister states? I am telling you. The 7 sister states, that is Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Tripura, Meghalaya and the Mizoram. Students, why the 7 sister states are calling so? इसको हम 7 sister states क्यों बोलते हैं? Because of the similarity between states in terms of geographical features and interdependence between them in political, social and economic areas is very large, ethnic and religious diversity. इसका मतलब ये जो राज्य हैं, 7 सिस्टर वाले राज्य जो मैंने बताए, ये राज्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं मीन्स डिपेंड करते हैं। जैसे आप खाना खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हो? मम्मी पे डिपेंड करते हो। इसी तरह से ये राज्य एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स। टुडे till here, and the word meaning are here. You can note down the word meaning in the copy and learn it by heart. Student, note down the word meaning. Word meaning को note down करो, उसे अच्छे से learn करो. First word is abode. Abode means a house or home. Second is parallel. Parallel means similar. Third is originates. Originates means start, begin. Okay students, these are your word meanings. You can note it down in the copy and learn it. In the next video we will continue this chapter. Till then, take care. Bye bye.